Hello students, welcome to Scholar IAS, your one-stop solution to IAS preparation. This is the series in which we take up one issue from the last week that is very important to a particular section of your syllabus of civil services. So this week we are going to take up an issue from the hardcore polity. You know that there has been a change in chief ministership in the state of Uttarakhand. Now Tirath Singh Rawat is the chief minister of that particular state. This is a topic which is assumed to be a low-key topic. Chief Minister is not often asked in the questions, are not asked in either prelims or mains. But I think it is important because in this particular session, apart from the ordinary information that you already have through your revision of Chief Minister in polity, I'll add up to some content towards the end of this session, which will be very helpful for you, especially in your mains and also in prelims examination. They can be formulated as different options to the MCQ that is asked. So let us take up today's topic. So students, this is polity topic that we are going to take today. And the topic is Chief Minister, envisaged role and actual working. So as you can clearly see, there are two components that I'm going to add. One is envisaged role. What I mean to say from this particular term, that is envisaged role, is how Constitution of India looks at the office of chief minister. What are provisions, what are expected role, right? And what is meant by actual working is that when different provisions of the constitution were actually put into work after independence was there, constitution starts interacting with the political process. Party politics gets intertwined, and that decides how the office actually works. And this is going to be the area of emphasis when we are going to study this topic. So why is it making news again? So as I told you, Tirath Singh Rawat is the new chief minister of Uttarakhand. How chief minister is appointed? It is appointed by the governor, as prime minister is appointed at union level by the president of India. So parallel to that, it is appointed by the governor of the state. You must remember this article of the constitution. Article 163 provides that there shall be a council of minister, right? And who is going to be the leader of that council of minister? It is going to be the chief minister. And what is the envisaged duty of that council of minister? It is to aid and advise. जो भी गवर्नर के नाम पे सारे decisions लिए जाते हैं, officially again, he is the head of the state, formal head of the state. So whatever decisions are taken in the name of the governor, de facto or as a matter of fact, all those are decisions of the council of minister. That is the elected government of the day. फिर वो सलाह देते हैं गवर्नर को, यही उनका main responsibility है. Now who can be a chief minister? So when general elections take place at the level of a state assembly, जब भी चुनाव होते हैं state assembly में, तो या तो कोई पार्टी अकेले सरकार बना सकती है. Suppose 100 सीट्स चाहिए मेजोरिटी में आने के लिए, तो दो पॉसिबिलिटी हैं. या तो एक पार्टी अकेले उतनी सीट्स ले आए, नहीं तो एक कोएलिशन ग्रुप बनेगा. व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट? वेरी सिंपली, व्हेन वन पार्टी डज नॉट हैव सिंगल हैंडेड मेजॉरिटी, डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू क्रॉस दैट मैजिक नंबर, एंड दे आर टुगेदर कॉल्ड द कोएलिशन गवर्नमेंट, राइट? तो जो मेजॉरिटी बनती है उसके बाद, चाहे वो पार्टी की बने या कोएलिशन ग्रुप की बने, इट इलेक्ट्स इट्स लीडर. उनके अंदर ये डिस्कशन होता है कि हमारा लीडर कौन होगा, तो वो नाम डिसाइड करके फिर गवर्नर को अप्रोच करते हैं, जिसको कहते हैं सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं कि वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वी हैव सफिशिएंट नंबर्स विद अस. जब ये दावा पेश होता है गवर्नर के पास, देन फॉर्मल अपॉइंटमेंट टेक्स प्लेस. गवर्नर चेक कर लेते हैं कि ठीक है, इस पार्टी या इस कोएलिशन फॉर्मेशन के पास सफिशिएंट नंबर है, 50% से ज्यादा सीट्स हैं, इनका गवर्नमेंट बनाया जा सकता है, राइट? और एक बार जब चीफ मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर अपना पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि ठीक है, हमारा होम डिपार्टमेंट इनके पास होगा, हमारा फाइनेंस इनके पास होगा, एनर्जी डिपार्टमेंट इनके पास होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो दिस इज हाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम्स इनटू बीइंग. प्रॉब्लम तब आती है या ट्रिकी सिचुएशन तब होता है when no one party gets the clear majority. Now it and coalition formation is also not taking place, let's say, then it is on the discretion of the governor of the state to apply his or her mind and then see किसके पास possibility है कि वो government बना सकते हैं, right? Suppose there is 50 seats are required. One party has 45 seats, another party has 40 seats. It is not a written rule
that 45 seats वाली पार्टी ही बुलाई जाए. Judiciary has time again clarified it that first chance should be given to that party which has highest number of seats. But there have been cases in which parties with lesser number of seats have been invited by the governor to form a government. The politics behind that will be discussed subsequently in our discussion. Now, what is the tenure of chief minister? Theoretically, again, जब तक pleasure of the governor रहे, क्योंकि governor appoints the chief minister, so governor can remove the chief minister also. But what is the actual practice? Since we are a democracy, so the core power flows from the people of India. So people का power election में reflect होता है elected government of the day के through. तो जब तक chief minister के पास enough majority रहती है legislative assembly में, तब तक governor उनको हटा नहीं सकते, right? ये एक्चुअल प्रैक्टिस में होता है. और कब डिसमिस कर सकते हैं? जब उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं रहे, बिकॉज अल्टीमेटली इन द parliamentary system of government, this majority support is the linchpin of the legitimacy. चीफ मिनिस्टर तभी तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं जब तक वो ये दावा कर सके कि हमारे पास मेजॉरिटी सपोर्ट है. ऑल्सो जब उस लेजिस्लेटिव असेंबली को लगता है कि इनके पास इनफ सीट्स नहीं है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करवाया जा सकता है. For instance, in recent in past week itself, similar kind of exercise was also undertaken in a state of Haryana. You know, there is a lot of hue and cry about farmers' protest, and Haryana is the hub of that protest. So there was a vote of no confidence that was flouted against Khattar government, that this government does not enjoy popular support, right? Because there were scenes in which even the BJP MLAs were asking the government to take some action against the farm laws, right? So in such cases, no confidence motion was brought in the assembly, but it was defeated subsequently. So this becomes another case in which the chief minister can be removed. So if we summarize the power and functions of the chief minister, first and foremost, it is to aid and advise the governor. Governor जो भी decision लेते हैं, rarely ही कोई decision ऐसा हो जो वो खुद से लेते हैं, right? He is a nominal head of the state. This is something that you need to keep in mind. Second, he is the head of the council of minister. मैंने आपको बताया कि once governor appoints the chief minister starts allocating portfolios or ministries to different ministers. Also, he is the leader of the house, and in this capacity, he is to communicate to the governor whatever decisions are taken by the council of minister, right? Whatever policy decisions are made by the state government, they are announced by him on the floor of the house. मतलब कुल मिलाकर के जिस तरह प्रधानमंत्री संसद में रोल प्ले करते हैं, उसी तरह का ऑलमोस्ट सिमिलर रोल इट इज एक्सपेक्टेड दैट चीफ मिनिस्टर प्लेज इन द स्टेट असेंबली. जब चीफ मिनिस्टर को लगता है कि नया चुनाव करवाना है, तो ही कैन ऑल्सो रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. टाइम टू टाइम इट हैज हैपेंड दैट the party which is in power can feel that if we go for election at this particular time, we will get even better majority. This happened with Indira Gandhi also after emergency, but she was defeated. That is another story. But the chief minister or the prime minister can also recommend dissolution, कि आप इस असेंबली को डिसॉल्व कर दें, इसको भंग कर दें. इसका मतलब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, a new election will be there. साथ ही साथ he can advise the governor for summoning, proroguing the sessions of the स्टेट असेंबली फ्रॉम टाइम टू टाइम. असेंबली को बुलाना है, उसे समन करना है, उसे प्रोरोग करना है. ये जो भी डिसीजंस गवर्नर लेते हैं, इसके लिए एडवाइस किया जा सकता है. नाउ इंटरेस्टिंगली वी आर गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस हाउ एक्चुअल वर्किंग इज टेकिंग प्लेस, बिकॉज जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, दैट इज ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट. हाउ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर इज एक्चुअली अनफोल्डिंग, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट on political alignments, political process, working of the party politics in the country, right? So it depends on the nature of relation between the union and the state government, right? As you know, some parties are national parties that are registered and given designation by the Election Commission of India. Some parties are registered parties, some parties are state parties, जिनका जो working का area है वो किसी state तक limited है, नेशनल पार्टी नहीं बन पाई है वो. तो अगर कोई नेशनल पार्टी भी चुनाव लड़ती है, फॉर इंस्टेंस यू कैन लुक एट द बंगाल इलेक्शंस राइट नाउ, राइट? सो बीजेपी इज कंटेंडिंग दिस इलेक्शंस. सपोज इट सिक्योर्स अ मेजॉरिटी इन द स्टेट असेंबली, राइट? नाउ हु विल कॉल द शॉट्स? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी द हाई कमांड
right? It won't be a decision that will be taken at the level of West Bengal unit of the BJP. The decisions will largely be taken by the head of the party or the party president or whoever is in the helm of power. For instance, Prime Minister Narendra Modi or Amit Shah, these people will be taking the decisions about what is going to be the nature of ministership and who is going to be the chief minister. So in such cases, it becomes a stage managed affair, and leader is technically nominated by the party high command, right? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे. Now let's say there is a coalition era, right? Now it means one single party does not have enough seats. So the role of governor becomes very important in such cases because no single party can clearly contend that we are having enough seats. So it becomes the discretion or application of mind from the side of governor is expected in that case. अब क्या possibility है? Let's say talk about Bengal itself. Trinamool Congress is also contending that we have support of this small party and we can form the government. Case 1. Now case 2 can be there where BJP says we are also having support of this particular party and we want to form the government. Now, as you know, the governor is appointed by the central government. It is very clear that governor of West Bengal will give first chance to that coalition whose leadership is taken by the BJP, right? इसलिए important हो जाता है he acts at the behest of the ruling party at the center and sidelines with the candidate. ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं. इस बात को ध्यान रखना है कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही केस में अपहोल्ड होगा, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के किसी कोएलिशन को इनविटेशन दें गवर्नमेंट बनाने के लिए या बीजेपी लेड किसी कोएलिशन को इनविटेशन दें, लेकिन वो किसको इनवाइट करते हैं ये बहुत क्लियर हो जाता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. नाउ वंस गिवन द चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर कैन बी अ लॉट ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग आल्सो. खरीद फरोख्त हो सकती है एमएलएस की. कुछ एमएलएस ऐसे हो सकते हैं जिनको डरा धमका करके गवर्नमेंट में बुलाया जा सकता है, राइट? सो आप यहां देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन होने के बाद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिग्विटी, राइट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स. इफ देयर इज अ रीजनल पार्टी, अगर रीजनल पार्टी है जहां पर स्टेट पार्टीज ही बहुत ज्यादा पावर में है, वहां पर रिमोट कंट्रोल का चांस बहुत कम हो जाता है और सीएम जो होता है वो एक ऐसा नेता होता है जो जिसकी पकड़ लोकल लेवल पे होती है, जो स्टेट लेवल पे बहुत स्ट्रांग होता है. फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स वहां पर रीजनल पार्टीज बहुत स्ट्रांग है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कमांड से डिसीजन ले ले इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. सिमिलरली इफ द सीएम इज बिलोंगिंग टू अ नेशनल पार्टी और फ्रॉम अ रीजनल पार्टी, इस केस में जो फंक्शनल स्पेस है ये भी कम ज्यादा हो सकता है. The kind of independence that will be enjoyed by a CM belonging to a regional party will be much more as compared to a CM belonging to a national party. Because for instance, अगर BJP ऊपर से किसी आदमी को नियुक्त करती है, you will be CM of this particular state, but that person does not have that much popular legitimacy at the state level on his own. अगर वो पार्टी के बल पर CM बनते हैं, तो जाहिर है कि पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा. उनके मिनिस्टर कौन होंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, किसके साथ कोएलिशन बनाना है, ये सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल से तय होने लगेंगे. सो उस सीएम के पास अगेन आई वांट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टू दिस पार्ट. सीएम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वेज स्टिल हैव सिमिलर काइंड ऑफ पावर टू सेलेक्ट द पोर्टफोलियो, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, बट डी फैक्टो वो कैसे फंक्शन करेंगे दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द हाई कमांड ऑफ पार्टी एट द नेशनल लेवल. So in these cases, hands of the CM are tied by either party high command or coalition partner. अगर regional party भी सरकार बना रही है, let's say in Bihar there is a coalition. There was earlier a coalition between JDU and BJP. None of them can clearly and single-handedly take the decisions. BJP will also ask for share. Then JDU will be having some kind of calculations in its mind. सो इतना जो फ्री फंक्शनिंग है सीएम का एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से, दिस डज नॉट बिकम अ पॉसिबिलिटी, राइट? So these are certain important and additional facts, students, and sort of analytical points that I wanted to give you. I expect that you try to take the notes of these actual working points that I've given and incorporate them in your answer. Now, 91st Constitutional Amendment is something that is very important. This is related to a revision in anti-defection law.
अब देखिए, जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, देन सीएम इज अंडर प्रेशर टू गिव मिनिस्ट्री पोस्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ कोएलिशन पार्टनर. सो अब क्या होता था, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि सरकार बनी रहे, वी इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स ऑफ मिनिस्ट्री इटसेल्फ. हम मिनिस्ट्री की संख्या ही बढ़ा देते हैं. तो इससे क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर स्टेबिलिटी कम हो जाती है गवर्नमेंट की. इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसने कहा कि 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस से ज्यादा मिनिस्टेरियल बर्थ हो ही नहीं सकते. फॉर इंस्टेंस, इफ देर इज 100 MLAs in particular state assembly, then at max there can be 15 ministers. So there is an upper limit on the number of minister itself. So of course now chief minister can say, I am sorry, there is upper limit to which ministers can be allocated. So now it is not in my hands. So students, I hope you enjoyed this video and you sort of got some new points, and that will help you in preparation ahead. Next week, I'll bring you some another important topic of polity or governance. Thank you so much.